हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सीए लवली भगत और आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A, B एंड C। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A एप्लीकेबल होता है व्हेन देयर इज अ डिले इन फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न। यूजुअली इनकम टैक्स रिटर्न का फाइलिंग डेट होता है 31 जुलाई ऑफ द असेसमेंट ईयर। इन केस अगर कोई भी एसएससी रिटर्न फाइल करता है आफ्टर 31 जुलाई तो फिर उस पर इंटरेस्ट चार्ज होता है एट द रेट ऑफ 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। पार्ट ऑफ द मंथ का मतलब ये होता है कि इन केस अगर आप दिसंबर में रिटर्न फाइल किए हो 2 ऑफ दिसंबर तो फिर आपका जो मंथ काउंट होता है वो अगस्त से लेकर फुल दिसंबर का हो जाएगा। इवन आप 1 डे भी किसी मंथ में एंटर कर जाते हैं तो वो पूरा फुल मंथ काउंट किया जाता है। तो फिर यहाँ पे इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A 1% फॉर 5 मंथ्स चार्ज होगा। इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B एप्लीकेबल होता है व्हेन देयर इज इनकम्प्लीट पेमेंट ऑफ टैक्स या डिले इन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स या फेल टू पे एडवांस टैक्स। ये एडवांस टैक्स पे किए हैं बट इट इज लेस देन 90% ऑफ द एसेस टैक्स। तो फिर इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ एप्लीकेबल होगा। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट स्टार्ट हो जाता है फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द असेसमेंट ईयर, मतलब 1 अप्रैल से टिल द रिटर्न फाइलिंग डेट। अब नेक्स्ट है हमारा इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C। इफ एनी पर्सन हैज डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स देन इंटरेस्ट विल बी चार्ज एट द रेट ऑफ 1% फॉर 3 मंथ्स on the amount of default of each installment. But for the last installment, interest shall be charged at the rate of 1% for 1 month. Now let us quickly check the circumstances in which interest under section 234C is payable. Where advance tax is paid on or before 15th of June is less than 12% of the tax due on return income, तो फिर amount on which interest is to be paid is 15% of the tax due on returned income minus advance tax paid up to 15th of June. Next point ये है कि where advance tax paid on or before 15th of September is less than 36% of the tax due on returned income, तो फिर 45% of the tax due on returned income minus advance tax paid up to September 15th. Where advance tax on or before December is less than 75% of the tax due on returned income, तो फिर 75% of the returned income minus advance tax paid up to December 15. And where advance tax paid on or before March 15th is less than 100% of the tax due on returned income, then 100% of the tax due on returned income minus advance tax paid up to March 15th. Now let us understand interest under section 234A, B and C with the help of example. Here an SSC Mr. X has estimated its tax liability for assessment year 2021 to 22 for rupees 5,50,000 and has paid advance tax accordingly. But actual tax liability was found to be rupees 10 lakh. Now Mr. X has paid balance amount on 1st of December 21 and filed return of income on the same day. Compute interest payable under section 234A, B and C. Here the actual tax liability is 10 lakh and return due date is 31st of July 21 and the return date is 1st of December 21. So interest under section 234A will be applicable on the balance amount, that is 10 lakh minus 5,50,000 which comes 4,50,000 at the rate of 1% for 5 months. 5 months here is calculated from August to December. Now comes to interest under section 234B. Here the actual tax liability is 10 lakh and the 90% of 10 lakhs is 9 lakh, but the tax has been paid for rupees 5,50,000. So there is a pending amount of rupees 4,50,000 and the interest will be applicable at the rate of 1% from 1st April on 4,50,000. Here the 9 months come from 1st of April to December. Now let's come to interest under section 234C. Here interest payable will be 10 lakh of 15%, 10 lakhs of 45%, 10 lakhs of 75% and 10 lakhs of 100% for the 4 installments. Next the interest paid on 5,50,000 at the rate of 15%, then 45%, 75% and 100%. And the difference amount will be the amount on which interest is charged under section 234C. Here the difference amount for the first installment
will be 1,50,000 minus 82,500 will be 67,500 for one person for 3 months. Similarly, for the second and third installment will be one person for 3 months, but for the fourth installment will be one person for 1 month. I hope you must have got idea about the interest under section 234A, B and C. If yes, then please hit the like button, subscribe to my channel. Till then, all the best, my FCAs.